Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was further correction in the market. Nifty was down by 90 points, and the close was below 19,000 level. So at 18,989. During the day, this realty, healthcare, and pharma space were the sectors where we saw some good amount of buying. Whereas metals, CPSE, commodities, and IT, there were selected stocks which has seen a sell-off. Now, if you talk of the chart pattern, so yesterday, even though when the Nifty has broken 19,000 level, the derivatives data suggests that there can be a short covering on the market. But the trigger will come when Nifty crosses 19,100 level. So, looking at the chart pattern, I believe that if during the day today, if 19,100 level is taken out, then we are poised for a bounce back on the market, and we can see a bounce towards 19,400, 19,500 level. So, bias for the market is positive. So, after 2 days of decline, I think today there is a possibility that market might find support, and today being a weekly expiry also in the after the first 1 hour of the trade, if the market settles near 18,950 or at the current level also, then I think we can look to add some intraday call option trade for the weekly expiry. So I believe today's day should be a positive day, and the confirmation will come when 19,100 level will taken out on the higher side. So that's the view for the Nifty. Coming to Bank Nifty was down by 145 points, and somehow the Bank Nifty is not able to take out 43,000 levels. So the immediate resistance is 43,500. So I believe if maybe in next 1 or 2 days, if 43,000 level is taken out, then there will be some bounce on the Bank Nifty. Supports each plays at 42,500 level. So this is a very tight range for the Bank Nifty. There is no specific trade as of now. SBI results are lined up. We are given a call option trade in the SBI for the November series at 570 for the 570 trade price. So the bias for the specifically it's a stock specific trade. PSU banks is something which is looking still positive on charts. Canara Bank had seen yesterday it was slightly down. I think then further the momentum will be seen. Besides this, there are a few selected stocks which are looking good on charts. Stocks like Blue Stars, Bsoft, Ajanta Pharma and Markson Pharma and Kalyan Jewelers. So these are the few stocks which are given a very good volume breakout. I think if the market sustains, then these stocks will see a good amount of breakout on the higher side. Coming to derivatives report, so there was again the sharp built up in the Nifty futures to the tune of 4.03%. The put call ratio has slightly declined from 0.91 to 0.82 levels. And if you see the call writing, 19,100 strike price, there's a call writing, so that is a resistance. So even from the derivatives point of view, if this level is taken off, then there will be bounce in the market. Lower side 18,850 put option. There is a put writing, so that is the support for the Nifty futures. On the Bank Nifty futures have also seen a short built up. The put call ratio uh, actually gained from 0.84 to 0.88 level, slight recovery, and the major writing was seen as 42,800 and 43,000 call options. So this is the immediate resistance for the Bank Nifty, whereas the support is seen at 42,700 and 42,500 put option. So that will be the support for the Bank Nifty. And if we look at the derivatives FIs data on the index future, they are still maintaining a short position in the market. Yesterday, they sold close to 4,843 contracts and they are net short by 1,62,000 contracts. And the long short ratio is at 15%. But then the way the FIs are selling the position and the market is not correcting much lower. Eventually, the previous week also we saw that 18,000, somewhere close to 18,800 the market came and we see a bounce. So it is likely that if 19,100 level is taken up, then this 18,800 might see as a bottom or maybe a base formation. So and we can expect a bounce in the market. So the trigger to watch is 19,100 levels. So that's a technical view.
I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Yeah, hi, good morning, team. So, starting with the Tata Steel. So, Tata Steel reported results which were below expectations. Their profitability, consolidated EBITDA per ton fell by 30% to nearly 6,000 rupees. So, this is quite negative. The second negative was they have taken restructuring charge in European operations because they plan to go green in Europe. So their 3 million ton capacity of blast furnace will be replaced by electric arc furnace, which is less polluting, but economically it's not viable. So because of these exceptional losses, the company reported losses at net level at standalone operations. So overall weak results. Second, Safari Industries. So Safari reported very good results. Revenue increased by 17.5%. So VIP had reported only 6.6% growth. So again, the market share gains for Safari continues. And in our report, we have actually raised our target price from nearly 4,000 to 4,800 simply because now the growth prospects of Safari are far better than VIP, and it deserves a premium to VIP industry. Then on Ambuja Cement, so Ambuja Cement's results were in line with our expectations. The only concern was volume, which grew only 7% on a standalone, and consolidated it was only 2% versus Ultratech, which had reported 15% plus volume growth. So EBITDA stood at 770 crores, which was up nearly 1.5 times on a YOY basis due to lower base, and overall margin was 19% compared to 20% in 1Q FY24. Then on Cera Sanitary, so Sanitary operating results were in line. Revenue growth of 11.5% and EBITDA was up by 13%. It is also worth noting that in the past 3 years, the company has launched 1,000 products, and these products are now contributing 29% of sales in FY 2Q FY24. So that is like one positive. Then on Neogen, so Neogen has successfully completed preferential allotment of 253 crores. So company proposes to utilize the net proceeds to support its growth initiatives in the battery material segment. And in its existing bromine business, they will continue to grow very fast, where they have been delivering in the last few years. So lastly, we release a report on monthly metals, where there was small decline in steel prices, but which was also accompanied by fall in raw material prices. But important thing to note here is that Chinese exports have increased to 32% in this current calendar year. So this is negative because in the past decade we have seen that when China exports it creates an oversupply in global steel market. So this is the trend that we are seeing as of now, and that is mainly due to weak growth in Chinese domestic market, since they are looking for alternatives, which always causes dumping. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, sir, and good morning, everyone. So we'll start with some further updates. Speaking of the numbers which were out yesterday, firstly, we'll talk about Godrej Consumer Products, where, according to the results, the consolidated year-on-year revenue was up by 6.2% at rupees 3,602 crores. EBITDA was up by 29.9% at rupees 704 crores, while the EBITDA margin stands at 19.5%. Overall, the reported profit was up by 20.6% at 433 crores. So overall, the results were good. Next results were of Hero MotoCorp, where the quarter two standalone year-on-year revenue was up by 4% at rupees 9,445.4 crores. EBITDA was up by 27.9%, while EBITDA margin was at 14.1%. Reported profit was up by 47.2% at rupees 1,053.8 crores. Overall, again, the numbers were quite positive for Hero MotoCorp. Speaking of JK Tires, revenue of the company was up by 3.8%, while EBITDA was up by 98% at rupees 589.1 crores. EBITDA margin stands at 15.11%, while the net profit was up by 401.1% at 248.6 crores. Speaking of Britannia Industries, the revenue of the company was up by 1.2%,
while EBITDA was up by 22.6% at rupees 872.4 crores. Reported profit was up by 19.6% at rupees 586.5 crores. The next update is on Maruti Suzuki, where the company has received a show cause notice from Agra's legal metrology department for not mentioning the MRP on the listed products available for sale on the company's website. Speaking of ICICI Bank, the bank has opened a branch at domestic tariff area in the Gift City. Next update is on Murgappa Group companies, where the Murgappa family arrangement is now effective. No listed company forming a part of Murgappa Group is a party to the family arrangement. Speaking of Bharat Forge, the company has approved additional investment in KPTL for rupees 33 crores. The next update is on Inox Wind, where the company allotted preference shares worth rupees 400 to Inox Wind Energy on a private placement basis. Another update on JK Tires and Industries. The company has approved an investment of rupees 1025 crores for expansion of tire manufacturing capacity. The manufacturing capacity is supposed to be increased by 19.45%. Uh, Speaking of Godrej Consumer Products, the board of the company has approved a dividend of rupees 5 per share, as well as incorporation of new wholly owned subsidiary to manufacture, sell, export personal and household care products. Next update is on GAIL, where the company has signed an agreement with Bharat Petroleum for a 15-year supply of propane for its upcoming petrochemical plant in Usar, that is in Maharashtra. The contract has an estimated value of rupees 63,000 crores and will see GAIL procuring 600 KTPA of the propane from BPCL's LPG import facility in Urand. Speaking of KPI Green Energy, the company has received new orders totaling to 6.5 megawatt executing solar power projects. Next update is on Bharti Airtel, where Managing Director Mr. Gopal Vittal said during the earnings call on Wednesday that Bharti Airtel will be spending much less on the upcoming spectrum auctions and subsequent sales over the next couple of years, as it does not require any additional airwaves but will renew the spectrum in a few circles. Speaking of SBI, uh, State Bank of India on 1st November announced that it has raised rupees 10,000 crores at a coupon rate of 7.81% through its first Basel III compliant Tier 2 bond for the current financial year. SBI informed that the bonds are issued for a tenure of 15 years with the first call option after 10 years. The bank also said that its first Basel III compliant Tier 2 bond attracted an overwhelming response with the bids of around rupees 15,907 crores and was oversubscribed by almost 4 times. Speaking of Bajaj Finance, the company's board has approved for the issue of 15.5 lakh warrants to the promoter Bajaj Finserv at a price of rupees 7,670 per warrant, which is a positive update for the company. Lastly, on ACC, where the company has got an assessment notice from Income Tax Department for rupees 102.45 crores, which should have a negative impact on the stock price going into today. So this was all from my side. I'll now hand it over to Kshitija ma'am for further updates. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन अब हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट है टाटा स्टील के ऊपर टाटा स्टील के जो नंबर्स आए थे वो बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं इंडिया का जो ऑपरेशन सेल्स वॉल्यूम है वो फ्लैट आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.8 मिलियन टन्स रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड इबिटा पर टन फॉल हुआ है 30% से ईयर ऑन ईयर एंड 19% क्यू ऑन क्यू बेसिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है 5,869 इंडिया EBITDA per ton remain flat है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 13,242 per ton है और शार्पली 71% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज देखा गया है कंसोलिडेटेड नेट डेट है अभी 770 बिलियन क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 कंपेयर टू लास्ट टाइम क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 में 714 था
5 TMP एक्सपांशन कलीनगर वो ट्रैक पे है। कंपनी ने स्पेंड किए 45 बिलियन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 में। नंबर्स इतने कुछ अच्छे नहीं आए थे टाटा स्टील के। देन सफारी के भी नंबर्स आए थे। सफारी के जो नंबर्स आए थे वो इनलाइन थे। रेवेन्यू है वो जंप हुआ है 17.5% से ईयर ऑन ईयर। और उसके अलावा कंपनी ने रिपोर्ट किया है रेवेन्यू 3696 मिलियन। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखी गई टूरिज्म एक्टिविटी में। ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है 309 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर। 27.4% से लेट हुआ था प्राइस हाइक। स्टेबल इनपुट कॉस्ट था। इबिटा जंप हुआ है 38.6% से ईयर ऑन ईयर। 537 मिलियन रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ है 221 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर। 14.5% से हायर है। और हम लोग पॉजिटिव है स्टॉक के ऊपर। टारगेट प्राइस है 4853 लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। अंबुजा के भी नंबर्स आए थे। स्टैंड अलोन इबिटा इनलाइन आया था। और फिनेंशियली हम लोग देखें तो ओनली कंसर्न था वो वॉल्यूम ग्रोथ था जो 7% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। स्टैंड अलोन अनकॉन्सोलिडेटेड म्यूटेड हुआ है 2%। इबिटा जो है वो 7.7 बिलियन है। 153% से हायर है ईयर ऑन ईयर। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था क्योंकि लोअर बेस था। और कंपनी का जो रिपोर्ट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया वो 19% है जो लास्ट टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% था। पैट अभी 6.4 बिलियन है। 363% से ईयर ऑन ईयर हायर है क्योंकि कंपनी को हायर डिविडेंड इनकम मिला उसके कारण। अगस्त 2023 में अंबुजा सीमेंट ने अनाउंस किया था एक्विजिशन संघी इंडस्ट्री लिमिटेड का। एंटरप्राइज वैल्यू है वो 50 बिलियन की है। प्रोसेस है कंप्लीशन और एक्विजिशन का वो एक्सपेक्टेड है कि क्लोज होगा Q3 में फाइनेंशियल ईयर 24 के। देन सेरा सैनिटरी के ऊपर भी अपडेट है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के जो रिजल्ट है वो एट पार आया है ऑल पैरामीटर्स पे। एक्सेप्ट जो पैट है वो डाउन है 8.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू कंपनी का रिपोर्ट किया 464 करोड़ जो हायर है 11.5% ईयर ऑन ईयर एंड 8.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इबिटा भी अप है 12.6% से। इबिटा मार्जिन स्टेडी है 16.5% से हायर है। और सैनिटरी वेयर एंड फ्यूसेटवेयर डिवीजन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 51 एंड 36% Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के रेवेन्यू में। कंपनी ने इंक्रीज किया है 4.3 एंड 15.7% स्टैंड अलोन बेसिस पे। सक्सेसफुली उन्होंने एक कमीशन किया है ब्राउनफील्ड फ्यूसेटवेयर का कैपेसिटी 25 सितंबर 2023 को। देन नेक्स्ट अपडेट है मंथली मेटल्स के ऊपर। ड्यूरिंग अक्टूबर 2023 इंडिया का जो स्टील प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है 4% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 56,500 पर टन। ऑल्सो चाइनीज स्टील प्राइसेस है वो डिक्रीज हुए 5% मंथ ऑन मंथ बेसिस $550 पर टन। ओवरऑल इंडियन स्टील की जो प्राइस है वो अकम्पन हुए फॉल इन प्राइस रॉ मटेरियल के कारण। कुकिंग कोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए 5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे $272 पर टन है। डोमेस्टिक आयरन ओर प्राइस डिक्रीज हुई है 11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 7,200 टन। ड्यूरिंग जनवरी टू सितंबर क्वार्टर में चाइनीज एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 32% जो 68 मिलियन टन है कंपेयर टू 51 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 22 में था। इन केस मतलब एक्सपोर्ट ट्रेंड कंटिन्यूस रहा तो पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज एक्सपोर्ट 7 ईयर के हाई एक्सपोर्ट हिट कर सकता है 85 से लेकर 90 मिलियन टन कैलेंडर ईयर 23 में। क्योंकि वो ओवर सप्लाई ग्लोबल स्टील मार्केट है उसके कारण। देन नियोजन केमिकल के ऊपर अपडेट है। सक्सेसफुली कंपनी ने कंप्लीट किया है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 253 करोड़ का। कंपनी का पर्पस है कि वो यूटिलाइज करेंगे नेट प्रोसीड सपोर्ट करेंगे ग्रोथ इनिशिएटिव को और बैटरी मटेरियल सेगमेंट में। इसके अलावा कंपनी मेंटेन करेंगे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एग्जिस्टिंग बिजनेस सेगमेंट में स्पेशलिटी एंड ब्रोमीन बेस्ड डेरिवेटिव्स और एडवांस इंटरमीडिएट एंड कस्टम सिंथेसाइज मैन्युफैक्चरिंग में। फंड जो है वो टैक्टिकली डिप्लॉय होगा रिटायर सम एग्जिस्टिंग डेप्ट और उसके अलावा रिक्वायर्ड होंगे तो। और कंपनी का इनफ लिवरेज है क्विकली एक्सपांड बेस करने में और इवॉल्विंग मार्केट सिनेरियो में। देन नेक्स्ट अपडेट है गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आए थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी ने 6.2% से हायर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3,602 करोड़ रिपोर्ट किया। इबिटा भी अप है 29.9% 704। देन कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 20.6% से हायर है 433 करोड़। नेक्स्ट अपडेट है हीरो मोटोकॉर्प के। हीरो मोटोकॉर्प का Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का स्टैंडअलोन रेवेन्यू
4% से ईयर ऑन ईयर हायर है 9,445 करोड़। EBITDA भी अप है, नेट प्रॉफिट भी अप है, 47.2% से नेट प्रॉफिट अप है, कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1,053.8 करोड़। देन जेके टायर एंड इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.8% से हायर है, 3,897.5 रिपोर्ट किया है करोड़। EBITDA भी अप है 98% से 589.1 करोड़। मार्जिन 15.11% से हायर है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 248.6 करोड़ का रिपोर्ट किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के भी नंबर्स आए थे। क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रेवेन्यू है वो अप है 1.2% से 4,432.9 करोड़ रिपोर्ट किया है। EBITDA भी 22.6% से हायर है 872.4 करोड़ से। कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है जो अप है 19.6% 586.5 करोड़। देन मारुति सुजुकी इंडिया जो है कंपनी, उनको रिसीव हुआ है शो कॉज नोटिस आगराज लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो मॉनिटरिंग कर रही थी एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल सेल्स और कंपनी के वेबसाइट में। देन आईसीआईसीआई बैंक है, उनका जो ओपन हो रहा है ब्रांच डोमेस्टिक टेरिफ एरिया गिफ्ट सिटी में। मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज है, उसमें जो मुरुगप्पा फैमिली अरेंजमेंट है नाउ इफेक्टिव होगी। नो लिस्टेड कंपनी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप, और जो पार्शली फैमिली अरेंजमेंट था। देन भारतपुर जो कंपनी है उनको अप्रूव हुआ एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो केपीटीएल में, जो 33 करोड़ का है। आइनॉक्स विंड ने, उन्होंने अलर्ट किया प्रेफरेंस शेयर्स 400 करोड़ का आइनॉक्स विंड एनर्जी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। जेके टायर एंड इंडस्ट्री कंपनी ने अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट ऑफ 1025 करोड़ का एक्सपांशन टायर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी 19.45% से। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उनके बोर्ड ने डिविडेंड ₹5 पर शेयर न्यू होली ऑन सब्सिडरी है मैन्युफैक्चर सेल एक्सपोर्ट पर्सनल एंड हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट का। देन गेल है, कंपनी ने साइन किया अग्रीमेंट भारत पेट्रोलियम के साथ 15 ईयर्स के लिए, जो सप्लाई करेंगे प्रोपेन और अपकमिंग पेट्रोकेमिकल प्लांट उसर महाराष्ट्र में। और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है अराउंड ₹63,000 करोड़ के अराउंड है। और गेल आगे जाके प्रोक्यूर करेगा 600 KTPA प्रोपेन BPCL LPG इंपोर्ट फैसिलिटी उरन में। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी कंपनी को न्यू ऑर्डर मिला है जो टोटल 6.5 मेगावाट एग्जीक्यूट करेंगे सोलर पावर प्रोजेक्ट। देन भारतीय एयरटेल जो कंपनी है, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है गोपाल विट्ठल, उन्होंने बोला है कि अर्निंग कॉल आज है कल था, और उसका जो स्पेंडिंग जो है मच लेस है अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, और सब्सिक्वेंट सेल है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में। इतना कुछ रिक्वायर नहीं है एडिशनल एयरवेव्स, बट रिन्यू स्पेक्ट्रम फ्यू सर्कल में होगा। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल अनाउंस किया कि वो रेज करने वाला है 10,000 करोड़, कूपन रेट 7.81% होगा थ्रू फर्स्ट बेस 3 कंप्लायंट टायर 2 बॉन्ड करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 34 तक। एसबीआई ने इन्फॉर्म किया कि बॉन्ड्स इशू हो गए टेन्योर 15 ईयर्स के लिए। ये फर्स्ट कॉल ऑप्शन होगा आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। और फर्स्ट बेसल 3 कंप्लेंट टायर 2 बॉन्ड अट्रैक्टेड है ओवर हेल्मिंग रिस्पांस के कारण, क्योंकि बिड्स जो है वो 15,907 करोड़ की है, और ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। देन बजाज फाइनेंस के बोर्ड है, उन्होंने अप्रूव किया इशू ऑफ 15.5 लाख वारंट्स प्रमोटर बजाज फिनसर्व को। प्राइस है 7,670 पर वारंट। एसीसी जो कंपनी है, उनको असेसमेंट नोटिस मिला है इनकम टैक्स से, जो अराउंड 102.45 करोड़ का है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.